Hello everyone. My name is Manas Pathak. I'm a student of MCA second year from IIPS DAVV Indore. Today in this video, I'll be explaining the architecture of Unix operating system. Unix operating system, I'm pretty sure you must be aware of it. It was one of the most popular operating system, and still it is relevant in the computer networks industry. The Unix operating system's architecture is one of the most fundamental and basic topics of this subject, which helps you in developing an understanding of how your commands are executed and how does a complete Unix operating system environment operates. I have chosen this particular topic because I believe most of the learners who start with Unix operating systems directly jump to its practical aspect and skipping this theoretical aspect, which I think shouldn't be advised because it is one of the most basic and fundamental topics, as I told you about. And it is also very important for your vivas and interviews, if you see like that. So, moving with this topic, for the course of this video, I'll be explaining concepts in Hindi as well as English for the ease of understanding. So this is the structure of Unix system as you can see. This diagram might seem a little complex to you, but it is very easy diagram. You just have to focus upon the three layers in this diagram. The first one in the middle is the hardware. The second is the kernel, and the third one is the shell. The Unix commands, system applications, database packages, compilers. These are used by shell itself as and when required, depending upon the command or the program or task which the user wants to execute. As you can see here, there are multiple users which, and each user has an access to its own shell. This was one of the most unique feature of the Unix when it was came that it supported multi-user systems. So this is the structure of a Unix system, and we'll move with different layers of the Unix architecture. You must be wondering why we have not taken shell as the first layer and the hardware as the last, because hardware is in the center. But for the ease of understanding, the hardware is considered as the first layer of the Unix architecture, and then the kernel, and the third and last layer should be shell. If you would find this diagram on Google and or at some other sources, you might also find an application program layer in the next circle after the shell. We haven't included this that layer in this diagram because it doesn't pretty much affects our understanding of the Unix or understanding about the working of the Unix operating system. And though basically what application program is, it is the set of programs which are used for any particular application, which can be user defined or built in. So moving with the first layer of the Unix architecture, it is the hardware. It consists of all hardware related information. It includes all the hardware devices which are part of our system, like monitor, keyboard, processor, primary and secondary storage devices, etc. It is this layer which we try to ultimately manipulate when we perform any task on our system. So basically, hardware, I'm pretty sure you must be aware with the term what hardware is. Our memory storage is primary or secondary, monitor, keyboard, mouse, and all those devices which together form our computer system are called hardware. So this center layer of the Unix architecture, this consists of all hardware related information and uh, what ultimately any operating software does, any if you're using Windows, Mac, Linux, Unix, anything, any operating system, what they will do is try to manipulate the hardware. हम जब भी कंप्यूटर पे कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, हम हमेशा हार्डवेयर को मैनिपुलेट करके ही वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, so this video is getting projected on your screen on your monitor, which is the output device, which is a hardware. Similarly, ये जो PowerPoint presentation है, this is stored in the my secondary storage device, which is my hard disk. ये मेरी hard disk में stored है ये PPT. एंड जब मुझे इसे स्लाइड शो में प्रेजेंट करना है या एडिट करना है, दिखाना है, तो फिर मैं इसे इसे खोलता हूँ, तो वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाती है, जिसके थ्रू मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ.
सो बेसिकली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो करेगा वो ये उसका काम यही होगा कि वो हमारे हार्डवेयर को मैनिपुलेट करे ताकि हम हमारे टास्क को परफॉर्म कर सके. So this was all about the hardware. The next layer would be the kernel. This is the heart of the operating system. It is a software that acts as the interface between hardware and software. Most of the tasks like memory management, file management, network management, process management, etc., are done by the kernel to achieve the desired outcome. So here we have mentioned kernel as equivalent of heart of the operating system. क्योंकि जैसे हम अपने हार्ट के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नेल के बिना फंक्शन नहीं कर पाएगा. जैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करके हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ताकि वो फंक्शन कर सके, वैसे ही कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई भी फंक्शन अगर हमें यूनिक्स में परफॉर्म करना है तो वो कर्नल ही होता है जो उन इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग हार्डवेयर तक पहुंचा पाता है और उन्हें मैनिपुलेट कर पाता है. तो बेसिकली कर्नल का काम यहाँ पे डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट करना होता है. यहाँ पे कुछ टास्क का एग्जांपल दिया हुआ है जो हम कर सकते हैं इन यूनिक्स, विच इज मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेनी मोर टास्क. जितने भी टास्क हम कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, दैट वुड बी डन थ्रू दी कर्नल. Shell provides simplified version of commands to kernel which are executable by it. This is a very important point here क्योंकि हम जिस लैंग्वेज में कमांड्स प्रोवाइड करते हैं, शेल में टाइप करते हैं, शेल इसमें हम नेक्स्ट सेक्शन में भी इस बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली जो हम शेल को कमांड्स देते हैं, हम जो आई एम प्रीटी श्योर आपको मालूम होगा कि जो यूनिक्स है जब वो उसके अर्लियर वर्जन रिलीज हुए थे तो वो एक जीयूआई बेस्ड जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है उस पर बेस नहीं था. हमें कमांड लाइन में वो कमांड्स टाइप करके देनी होती थी. तो हम उसी अप्रोच से अभी भी यूनिक्स को पढ़ेंगे. तो इसलिए जो भी कमांड्स जो हम प्रोवाइड करते हैं शेल में जो हम टाइप करते हैं, दोज आर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि एलएस लिस्टिंग की कमांड जो है, या फिर एमबी मूव करने की जो कमांड है, रिमूव करने की आरएम जो कमांड है, ये सब एक ह्यूमन लैंग्वेज में गिवन है. जो मतलब ये हमारी ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज से क्लोज है, बट इट इज नॉट द लैंग्वेज विच कर्नल ऑपरेट्स. तो हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं कमांड्स, और शेल का काम होता है कि उस उन हाई लेवल लैंग्वेज कमांड्स को एक लो लेवल कमांड में, लो लेवल कोड में कन्वर्ट करे ताकि कर्नल उन्हें समझ सके और उसके अकॉर्डिंग उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि बिकॉज कर्नल ओनली अंडरस्टैंड्स लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल कोड. Kernel is programmed in C language. So if you're wondering in which language does the script of kernel was written, so it is the C language. The particular reason for choosing C language was because of simplicity and easy syntax of this language and popularity of this language in 1969 when the Unix operating system was in development. Made it a very comfortable choice for the programmers to use C language as the script of kernel. There is only one kernel in the system which is loaded into memory when system is booted. तो जैसे हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही हार्ट है हमारे पास, वैसे ही एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही कर्नल होता है, एंड उसी कर्नल को जो मल्टीपल यूजर्स है, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है, सारे मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल शेल्स, इन सब के लिए कर्नल सिर्फ एक ही है. तो ये सब मिलके सिर्फ इस एक कर्नल के थ्रू ही अपनी कमांड्स और अपनी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. और ये कर्नल जब सिस्टम में तब बूट होता है जब कोई सिस्टम को मतलब मेमोरी में तब लोड हो जाता है जब हम सिस्टम को बूट. Kernel isolates itself from user command and is independent of hardware, which increases portability of Unix. सो कर्नल डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज में ही हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं सकता है कर्नल, तो इसलिए वो जो यूजर कमांड्स है उनसे खुद को आइसोलेट कर लेता है. फर्दर जो यूनिक के पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हार्डवेयर के साथ ही काम कर सकते थे. तो वो एक लिमिटेशन थी क्योंकि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हार्डवेयर पे एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कर पाएगा. बट यूनिक्स ने ये चेंज कर दिया है, एंड दैट इज व्हाई यूनिक्स बिकेम सो पॉपुलर एंड वाज सच एन रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी. बिकॉज अब किसी भी टाइप के हार्डवेयर, भले प्रोसेसर किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड हो, मेमोरी का साइज कुछ भी हो, उन सबसे इंडिपेंडेंट था यूनिक्स. एंड दैट इज व्हाई कि किसी भी सेट ऑफ हार्डवेयर पे सेम यूनिक्स सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं. So that is why Unix was very, very popular. This was one of the most revolutionary features which Unix brought with itself.
So the third and final layer of the Unix architecture is the shell. This is the interface between user and the kernel, relieving user from having knowledge about the kernel functions. तो जैसे कर्नल शेल और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस था, वैसे ही जो शेल है वो यूजर और कर्नल के बीच का एक इंटरफेस है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कर्नल जो है वो लो लेवल कोड को समझ पाता है, वो जो कॉम्प्लेक्स कोड है जो हम प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कमांड्स जो है जो हम प्रोवाइड करते हैं शेल को, वो उन्हें समझ नहीं पाता है। सिमिलरली जो कर्नल जिस कोड में ऑपरेट करता है, जिस सिंपल एंड लो लेवल कोड में कर्नल ऑपरेट करता है, उसे यूजर के लिए समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, एंड वो बेसिकली won't allow many users to access the Unix operating system. That is why Unix permits the use of complex commands. So, to relieve the user from having knowledge of these simple and low level commands which are used by kernel for execution of the functions, uh, uh, Unix provides the user with the shell, which acts as an interface. Shell is the utility that processes your request. When you type in a command at the terminal, the shell interprets the command and calls the program that you want. Shell when analyzes the command and its associated arguments, it modifies and simplifies them before passing it to the kernel. This permits use of complex command structures that can't be understood by kernel. So shell acts like an interpreter for all those commands and to translate them to suitable. तो यहाँ पे शेल के बेसिकली दो फंक्शंस बताए गए हैं। फर्स्ट इज कि वो एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है यूजर और कर्नल के बीच में, एंड इट एक्चुअली टेक्स द कॉम्प्लेक्स कमांड्स फ्रॉम द यूजर, एंड इट्स सेकंड फंक्शन इज टू एक्ट लाइक एन इंटरप्रेटर फॉर द कर्नल, कि जो कमांड्स यूजर ने प्रोवाइड करी है वो उन्हें मॉडिफाई और सिंप्लीफाई करे, then provide them to the kernel so that kernel could manipulate the hardware and ultimately execute the command which the user wants. So yeah, the shell को एक interpreter की तरह भी समझा जा सकता है. For a better understanding, we also have an example over here. Shell can be understood as an examiner. Shell can be understood as an examiner who thoroughly examines the command given by the user, and only when it finds it suitable for the execution, it passes it for execution. अब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि आपने सीयूईटी जेई जैसी एग्जाम्स अगर दी हो, तो आपको मालूम होगा, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी हो, तो वहां पे एक एग्जामिनर होता है जो आपका एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ को वेरीफाई करता है, एंड ओनली जब वो सेटिस्फाइड रहता है, जब वो एग्जामिन करके सेटिस्फाई हो जाता है कि यू आर अ वैलिड कैंडिडेट फॉर द एग्जाम, when he finds you a suitable candidate for the exam, he allows you to sit and give the exam. तो वैसे ही शेल भी यहाँ पर एक एग्जामिनर की तरह है, जो हमारी पास करी हुई कमांड्स को पहले एग्जामिन करता है, ही इट चेक्स कि जो कमांड्स हमने पास करी है वो वैलिड कमांड्स है कि नहीं, वो करेक्ट, उनका सिंटेक्स करेक्ट है कि नहीं, एंड ओनली व्हेन जब उसे वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो हमने कमांड्स दिए हैं उनका सिंटेक्स करेक्ट है, वो सही कमांड्स है, देन ओनली इट passes those commands to the kernel for the execution. So yeah, this was all about your architecture of your Unix operating system. Thank you so much for watching this video. I hope you must have gained some great insights from this video. Also, this video is my submission for the third internal assessment of Unix operating system subject. I would also like to give my heartfelt gratitude to Professor Basan Namdev and author of the Unix applications and system textbook, Dr. Sumitaba Das. Their contributions have been invaluable in my academic journey. So thank you so much. And thank you so much for everyone who has watched this video. Please consider liking and subscribing to my channel. Thank you so much.